Your phone. Sharma's phone. Sharma is not here. Oh, it's there. Okay. Can't start until that's done. Namo Buddhaya. Jai Bhim. So, it's easy to give talks. So प्रवचन देना सहज है. But it's very difficult to ask questions. लेकिन सवाल पूछना कठिन है. Difficult, real questions are very difficult to ask. तो जो सही सवाल होते हैं वो सही में बहुत ज़्यादा कठिन होते हैं पूछने के लिए. So this is your test. तो अभी आपकी परीक्षा है. Okay, anything that you would like further clarity on? तो ऐसी कुछ बात है जिसको आपको और ज़्यादा स्पष्टता की आवश्यकता है. Anything you didn't understand and so on? या फिर कोई ऐसी बात जो आप अभी तक ज़्यादा समझे नहीं हैं. Here I am. तो मैं यहाँ पर हूँ जवाब देने के लिए. Ah, that was the missing one. So everything's completely clear? No, here comes a question. No. What is a correlation between mandala nirman and earth, water, means all five elements? What is the correlation between the mandala, building the mandala and five? Yes. Yeah. Hindi mein? What's the question? What is the relationship between the mandala and the five elements? तो मंडल और पांच जो धातु है उसमें क्या संबंध है? So, first question is a good question. तो पहला जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल है. In fact, of course, the whole universe is made up of the five elements. तो वैसे देखा जाए तो सभी विश्व जो है ये इस पांच धातुओं से बना है. So that it's earth, water, fire, air and space, within which, or out of which, the universe is constructed. तो ये पृथ्वी, आग, तेज, वायु और आकाश के माध्यम से ही ये पूरा जो ब्रह्मांड है या विश्व है वो निर्माण होता है, निर्माण किया जाता है. And of course, if there's conscious beings there, consciousness too is present. और अगर उस ब्रह्मांड में या विश्व में अगर सचेतन ऐसे सजीव है तो निश्चित रूप से वहाँ पर फिर चेतना मौजूद होती है. So this is quite important to realize. तो ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है. And so I'm grateful for the question. इसलिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ आपके सवाल के लिए है. So if when you're doing the practice, you can also connect it with the six element practice. तो जब आप मंडला अर्पण अभ्यास करते हो तो आप छह धातुओं से भी संबंधित होते हो. You're, as it were, assembling the six elements into the world. तो इस विश्व में एक प्रकार से आप छह धातुओं को इकट्ठा लाते हो, इकट्ठा करते हो. And then you're dissolving them again. और उनको फिर विलीन करते हो. So this is quite significant. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है. Of course, the elements are not physical objects. तो ये जो धातु है वो कोई प्रत्यक्ष ऐसी वस्तु नहीं है. In a way, you might be better off saying that the elements are states or conditions of energy. तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो धातु है एक प्रकार से हमारी जो ऊर्जा है उसकी वो स्थिति है, उसकी वो अवस्था है. Earth is energy that is, as it were, moving downwards. तो पृथ्वी ऐसी वो ऊर्जा है जो नीचे की तरफ जाती है. It's energy that is slow moving, is congealed. तो ये ऐसी ऊर्जा है जो बहुत धीरे से चलती है, तो उसकी गति धीमी होती है. And then water is energy that is beginning to flow. और ये आप जो है वो ऐसी शक्ति ऊर्जा है जो बहना शुरू होती है. But it only flows on one level. लेकिन वो जो बहती है वो एक ही स्तर पर बहती है. Then fire is energy that is
going upwards. और तेज जो शक्ति है वो ऊपर की तरफ बढ़ती है. Even energy that's beginning to transform. तो ये ऐसी ऊर्जा है जो परिवर्तन की शुरुआत करती है. Air is energy that is moving in all directions. और वायु ऐसी ऊर्जा है वो जो सभी दिशाओं में बहती है. And space is simply complete openness. और जो आकाश है वो पूरी तरह से खुलापन होता है. So consciousness, of course, is simply the awareness of that energy. और जो चेतना है वो एक प्रकार से इस प्रकार की ऊर्जा के प्रति जागृति है. So these different modes of energy, as it were, form the universe. तो ये अलग-अलग प्रकार जो है ऊर्जा के, उसी से फिर ये विश्व ब्रह्मांड बनता है. And when the relationship between them breaks down, everything breaks down. और उनका जो आपसी संबंध है अगर वो टूट जाता है, बिखर जाता है, तो हर एक बात जो है बिखरना शुरू होती है. We too are energy. हम स्वयं भी ऊर्जा है. There is energy in us that is, as it were, static. तो हमारे अंदर जो शक्ति ऊर्जा है वो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि स्थिर ऐसी ऊर्जा है. There's energy that flows. ये ऐसी हमारे अंदर ऊर्जा है जो प्रवाहित है. There's energy that rises up, that transforms. ऐसी ऊर्जा भी हमारे अंदर होती है जो ऊपर चलती है और जो परिवर्तित करती है. There's energy that spreads in all directions. हमारे अंदर ऐसी ऊर्जा होती है जो सभी दिशाओं में प्रवाहित है. And there's the complete openness within which the energy operates. और ऐसा खुलापन होता है जिसके मध्य में ये जो ऊर्जा है वो काम करती है. And there's awareness of all that energy. और वहाँ पर फिर ऐसी जागृति होती है जो ये सारी ऊर्जा के प्रति जागृत होती है. So yes, at the same time as we're constructing the universe out of earth, water, fire and air and consciousness, उसी समय जब हम पृथ्वी, आप, तेज, वायु से ये जो पूरा विश्व है ब्रह्मांड निर्माण करते हैं, we're also recognizing we too are earth, water, fire, air, space and consciousness. और उसी समय ये भी हम सोचते हैं या इसके प्रति हम जागरूक हो जाते हैं कि हम भी पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश और चेतना है या विज्ञान है. And as it all comes together to form us now, तो अभी वो इकट्ठा आए हैं और हमें इस तरह से उसने बनाया है. it all goes as well. और जैसे उसने हमें बनाया है तो एक दिन वो चले भी जाएगा. So at the same time as you're offering the mandala to the Buddha, और जब हम बुद्ध को मंडल अर्पण करते हैं, you're offering yourself to the Buddha. तो आप स्वयं को भी बुद्ध को अर्पित करते हैं. And by the way, there's this issue about which direction you make the offering. तो ये भी एक सवाल आता है कि किस दिशा में वो आप अर्पण करते हो. I don't know whether I said this myself on a previous occasion or whether somebody read it. तो मुझे पता नहीं कि ये बात मैंने इसके पहले कही है या किसी ने इसके बारे में पढ़ा है. But the Tibetans say that if you want to create merit, you offer the mandala inwards. तिबेटन लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आप पुण्य कमाना चाहते हो तो जो मंडल है आपकी तरफ अर्पण करो. If you want to offer it to the Buddha, you offer it outwards. अगर आप उस बुद्ध को अगर अर्पित कर रहे हो तो उसको आपने बाहर अर्पित करना है. So in a way, it's up to you. तो अभी ये आप पर निर्भर है कि क्या करना चाहते Do you want a little bit of merit or do you want a whole lot of merit? तो अगर केवल थोड़ा सा पुण्य आपको चाहिए या पूरा का पूरा पुण्य आपको चाहिए. Because if you give the offering to the Buddha, of course that's a highly meritorious action. तो जब आप अर्पण जो है बुद्ध को करते हो तो वो सबसे ऊंची ऐसी पुण्यवान या गुणवान बात होती है. Personally, I think that it's not appropriate to offer it as it were to yourself. तो मुझे स्वयं को लगता है कि उतना योग्य नहीं होगा कि हम स्वयं को ही वो अर्पण करें. Even if traditionally this is said. पारंपरिक रूप से भले ही ये कहा गया हो कि आप ऐसा कर सकते हो, फिर भी Offer it to the Buddha. तो बुद्ध को अर्पित कीजिए. That's what we're here for. और इसीलिए हम यहाँ पर हैं. And that's even what we say. और ये भी बात हम बोलते हैं, एक्चुअली कहते हैं वैसा. Idam ratna mandala kang, etc. Yeah. तो ये जो है हम कहते हैं वहाँ पर. I offer it to the Buddha, not mere. मेरे स्वयं के प्रति. हम बुद्ध के प्रति अर्पण करते हैं ऐसा कहते हैं, ना कि स्वयं के प्रति अर्पण करते हैं. So yes, I suggest that forget about that and just offer to the Buddha. तो अभी ये बात भूल जाओ खुद को अर्पण करने की और बुद्ध को ही अर्पण करना शुरू करो. It's a bit more difficult to stop all the stones from going everywhere. तो अभी ऐसे अर्पण करते समय फिर ये कठिन होगा कि सब कुछ जो है वो बिखर न जाए, इसलिए रोकना. But this is part of the merit that you're making.
लेकिन ये जो पुण्य है उसका ही अंग है, ये हिस्सा है। Keeping it in your lap. तो आपके जो भी लैप को क्या बोलेंगे, हिंदी लैप, गोद, हाँ, यस, थैंक यू वेरी मच। तो गोद में ही उसको रखिए। It's good you've got a Hindi dictionary here, yes. Okay. ठीक है। Anything further? तो इसके आगे Otherwise, I'll start asking you questions. मैं सवाल पूछना शुरू करूँगा। Yeah, one question related to Sukhavati. In the last mandala offering, we say that we will attain Sukhavati. This kind of we will Sukhavati from whom I have. In the mandala offering in the last, we say like we will attain Sukhavati. We will attain Sukhavati. Does it say that? Yes. A pure land. Yeah, all the beings should attain the pure land. Yes. Well, strictly speaking, probably that should not be translated as Sukhavati. Yeah. तो बिल्कुल अगर कहा जाए तो उसका भाषांतर जो है वो सुखावती नहीं करना चाहिए। It probably should be translated as a Shuddha Bhumi. उसका जो भाषांतर है केवल शुद्ध भूमि होना चाहिए। But anyway, what's your question? My question is that the concept of Sukhavati, Yes. in literal meaning, like a Mahayana tradition. So we will be born in the land of the Dava. So here, and if we born there, then through the wish, the bliss of Amitabha, we will attain Nibbana. So the concept is a little bit different than the Theravada. So means here, so how we understand the concept of Sukhavati? Okay. Because Sukhavati word is not Right. Yeah. But in Hindi? हिंदी में पूछिए। मैं बोल रहा था कि जब सुखावती, हम लोग बोलते हैं कि सारे जो सत्व हैं वो सुखावती को प्राप्त हो या शुद्ध भूमि को प्राप्त हो, तो सुखावती जो कंसेप्ट है, विचारधारा है, वो महायान बुद्धिज्म में और खास करके जापान में जो अमिताभ बुद्ध लोग हैं वहाँ पे सुखावती वहाँ पे रहते हैं, और उनकी कृपा से हम जब वहाँ पे रिबॉर्न होंगे, जहाँ जन्म होगा, तो उनकी कृपा से हम निब्बान को प्राप्त हो जाएंगे, बुद्ध को प्राप्त हो जाएंगे, और फिर वहाँ से लौट करके यहाँ पे आएंगे और फिर लोगों के लिए काम करेंगे। तो इस तरह का कंसेप्ट, इसको यहाँ पे हम कैसे समझें? मतलब अमिताभ के संदर्भ में समझें या साक्य मुनि के संदर्भ में कैसे समझना है? Yes, so first of all, please let's make sure that the translation is correct. तो सबसे पहले ये ध्यान में रखिए कि जो भी भाषांतर किया गया है वो सही है। In Mahayana thought, Sukhavati is simply one of the possible Shuddha Bhumis. तो महायान के संदर्भ में सुखावती जो है वो जो भी संभाव्य ऐसी शुद्ध भूमियाँ होती है उनमें से एक है। So each of the 5 Buddhas has their own Pure Land. तो हर एक 5 बुद्धों में से हर एक बुद्ध की अपनी स्वयं की शुद्ध भूमि है। So for instance, Akshobhya's Pure Land is Abhirati. जैसे कि अक्षोभ्य की जो शुद्ध भूमि है वो अभिरति है। And so on. इस तरह से। Anyway, nonetheless, the question is, what is the relationship between that and the early conception? तो ऐसा होने के बावजूद भी जो सवाल है ये है कि इसका संबंध फिर जो शुरुआती परंपरा है उससे किस तरह से है? Well, so there are 2 different backgrounds to this. तो इन दोनों को 2 अलग-अलग पृष्ठभूमियां हैं, पार्श्वभूमियां हैं। In the Pali, let's not say Theravada, because that's only a particular interpretation of the Pali. तो अभी यहाँ पर हम थेरवाद नहीं करते क्योंकि थेरवादी जो है वो पाली का विशिष्ट ऐसा स्पष्टीकरण है। Even a somewhat narrow interpretation. इन अर्थ से फिर वो मर्यादित ऐसा स्पष्टीकरण है। But don't tell everybody that. सभी को ये मत बताइए। But in the Pali texts, you'll find a reference to the Shuddhavasa Devalokas. तो पाली ग्रंथों में ये संदर्भ आता है जिसको शुद्धवास देवलोक कहा गया है। So it's said that once one becomes a non-returner, well, you still not attained complete liberation. तो उसमें ऐसा कहा गया है कि अगर आप अनागामी भी बनते हैं तो भी अभी आपने पूरी तरह से मुक्तता या विमुक्ति नहीं पाई है। You still have a being, you still have a continuity of awareness.
तो एक सत्व के रूप में वहाँ पर अभी भी आपकी जो जागृति है या चेतना है उसकी निरंतरता होती है। But there's none of the karma that will lead you into this world. लेकिन ऐसा कोई भी कर्म वहाँ पर बचा नहीं होता जो आपको इस जगत में फिर से लाएगा। So what happens to you? फिर ऐसे समय आपके साथ क्या होता है? What is said to happen is that you're reborn in the Shuddhavasa Deva Lokas. तो फिर आपके साथ क्या होता है? तो ऐसा कहा जाता है कि फिर आप शुद्धवास देवलोक में जन्म लेते हो। These are sort of beyond even the Arupa Loka. तो ये जो भूमि है वो आरोप लोक के परे है, ऊपर है। So they're kind of semi-transcendental. Yeah. तो उसको हम एक प्रकार से सेमी को आधा, हाँ नहीं सेमी नहीं, अर्ध, बराबर, अर्ध लोकोत्तर अवस्था की भूमि होगी। So you're sort of you have insight, deep insight, but you still have some attachment to existence. आपकी जो अंतर्दृष्टि होगी बहुत गहरी होगी, लेकिन फिर भी आपकी कुछ आसक्ति बची हुई होगी। So that allows for a very subtle sort of world for you to exist in. और इसी कारण फिर आप एक प्रकार से बहुत ही सूक्ष्म ऐसे जगत में फिर से पुनर्जित होने की बात होती है। So that's one element from the basic texts that is in the background of the idea of the Pure Lands. तो ये जो मूलभूत ग्रंथ है या शुरुआती जो ग्रंथ है उसमें ये आधार है जो इस कल्पना को जन्म देता है जिसको हम सुखावती कहते हैं या शुद्ध भूमि कहते हैं। Yeah, Shuddha Bhumi, yeah. But there's another conception too. लेकिन और एक